Hello everyone, sabko sexy or satrangi salam. It is our great pleasure to welcome you to the first day of the Love, Sex and Data conference. I am Debismita from Agents of Ishq and I will be your MC for the evening. A few pointers first. Translations are available in Indian Sign Language, which you will be seeing on the screen. Audio translations are also available in Hindi and Bangla, which you can access by clicking on the globe icon at the bottom of your screen towards the right. जिनको हिंदी में ऑडियो ट्रांसलेशंस चाहिए, आप आपके स्क्रीन के नीचे एक गोल ग्लोब आइकन है, आप उसको क्लिक कीजिए, हिंदी सिलेक्ट कीजिए, आपको ऑडियो ट्रांसलेशंस मिलेगा। যারা বাংলাতে অডিও ট্রান্সলেশন চায়, আপনি আপনার স্ক্রিনের নিচে একটা গোল আইকন আছে, গ্লোব আইকন, ওটাকে ক্লিক করবেন তো আপনার বাংলা ট্রান্সলেশন পাবেন। We would like to emphasize that this is a safe space and we would like everyone to be polite and respectful to each other, to the speakers and their opinions expressed. There will also be a Q&A where you can ask your questions. So you can drop your questions in the Q&A box, which our moderator will take. So to now introduce the panel, our panel is called Love, AAJ or PARSO, Sex Ed Across Generations. And every generation feels that they are the first ones to talk about sex or the first ones to break the awkward silence about sex. But how has a conversation on sex changed over time? Are there some questions that always remain the same? And what are the DC legacies of sex education? These are some of the questions that we are walking into this panel with. We have an amazing intergenerational panel of Indian sex educators whose work not just spans across different times and different generations, but also across different social contexts, right from rural Rajasthan in the 80s to the Instagram sex positivity space in the present. Each of our amazing panelists have had their own unique approach to sex education that we have a lot to learn from. So whether you're a person who gives sex ed or has suffered from the lack of it, I think we are very excited to have this sort of charcha on sex pe kaise kare charcha. Let me introduce our panelists. I'm very excited to have them on this panel, I must say. Our first panelist is Indira Pancholi ji. Indira Pancholi is a feminist and activist. She is the founder of the Mahila Jan Adhikar Samiti, which is a women-led organization in Rajasthan. And most people would know her as one of the women behind the book Sharir Ki Jankari, an iconic handbook on women's sexuality and autonomy, which was made with 75 women in rural Rajasthan way back in the 80s. It is one of, I think in the feminist movement, it is known as the Lal Kitab, and many people have said that they want to see it get reprinted. And Indira Pancholi ji is coming to this panel with an experience of working in the grassroots for almost 25 years. Our next panelist is Purvi Yadav, who has co-founded the organization Sahas. She's a young activist. She co-founded her organization in 2016 with the intention to see a world which is free of gender violence. She brings with us the experience of having taken gender and sexuality programs in government schools in Delhi with young adolescents, with women, with police. So she has taken a lot of sex education sessions and she brings to her that experience of being a young activist. Our third panelist is Srinidhi Raghavan, who is a feminist, who is a disabled feminist, a writer, a trainer, a sex educator. She has worked in numerous organizations, feminist organizations, disability rights organizations for almost 10 years and has taken so many sessions. A lot of her work lies at the intersection of gender, sexuality, and disability. She's also one of our go-to people at Agents of Ishq to take sex ed sessions, and to see her charm young people in her session is one of our greatest pleasures, I would say. And she is also one of the co-lead of programs at Rising Flame, which is another organization that you guys should definitely look up. And of course, last but not the least, is our amazing and gracious moderator, Leeza Mangaldas, whom a lot of you must have encountered online. She is a pleasure positive content creator on YouTube, on Instagram, and her work reaches a lot of people across India, a lot of young people across India. And her work has amazing reach, and she does her work in both Hindi and English. She has also been named a Pleasure Fellow by the Pleasure Project for the year 2021. So welcome to this conversation. All of our panelists and our moderator too have all been having this conversation on sex in a wide variety of ways. And they have such a wide range of experience when it comes to talking about sex, whether be it online or offline, be it with women in rural India or adolescents in urban India.
And I think we have a lot to gain from this exciting conversation. So, Leeza, I invite you to take over as a moderator and let the sexy charcha begin. Thank you so much. Thank you so much, Debasmita. That was a lovely introduction. I'm so honored to be able to moderate this conversation. And I thought before we really begin asking questions, I wanted to give each of our speakers the opportunity to tell us a little bit more about the spaces that they've created for dialogue around sex. I think it's always nice to hear in the first person about the sort of vision that informs one's approach to sex education so that people sort of just understand where each of us is coming from. So Indira ji, should we start with you? Would you like to tell us a bit more? हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के आयोजकों का, बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर। हालांकि जो आज का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इस मुद्दे पर बात करने में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, ये बात मैं पहले ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि अभी पूरे देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है ऐसे समय में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये मुद्दा हमेशा ही साइडलाइन रहा है, तो इस मुद्दे के लिए ये इशू बहुत इम्पोर्टेंट है और ये महिलाओं के हमारी अपनी सबकी जिंदगी के साथ बहुत इंटीग्रेटेड है, तो ये इशू को साइड करना हमेशा बड़ा आसान है। तो ऐसे समय में भी, कठिन समय में भी हम इस इशू को सामने लाके इस कॉन्फ्रेंस को कर रहे हैं। ये अपने आप की, जो मैं अपने एक्सपीरियंस में देखती हूँ पीछे से, टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है अपने आप में एक, मैंने 2-3 ऐसे बड़े आयोजन, सामूहिक आयोजन अटेंड किए हैं अपनी लाइफ में पास्ट में। बहुत सालों से इस तरह का एक बड़ा आयोजन जो ओपन में हो रहा है, बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि आपने सुना कि मैं महिला जन अधिकार समिति से आती हूँ और पहले बहुत जन आंदोलनों में जुड़ी रही हूँ और महिला समूहों, महिला विकास कार्यक्रम राजस्थान में चला, उसके साथ एसोसिएटेड रही हूँ। तो ये जो पूरा लाल किताब का प्रोसेस था, जो आप में से कई लोगों ने देखा है और जानी होगी इस किताब को, ये हमने जब शुरू किया वो 80 का दशक था। और 80 के दशक में मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमको हर बार लगा कि हम पहली बार ओपन में बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि हर समाज में कोई ना कोई स्पेस होती है जहाँ लोग इन मुद्दों के बारे में बात करते हैं, सामूहिक रूप से बात करते हैं, और खासकर जिस ग्रामीण कल्चर में हमारा संगठन काम करता है और मैं जहाँ से आती हूँ वहां पर औरतों के लिए हमारे ग्रुप्स में इसके ऊपर ओपन में बात करना और मजे लेना, उस बात में मजा लेना, प्लेजर लेना, वो बड़ा ही आम है। तो उस बातचीत में प्लेजर लेना वो भी एक मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो ये तो है मेरा परिचय। और ये अभी 80 के दशक से लेके आज तक जो मेरा अपना काम रहा है, वो अभी हम लोग काफी एडोलेसेंट लड़कियां, यंग लड़कियां, एक्चुअली डिफरेंट एज ग्रुप के साथ में एसोसिएट करते हैं, जिसमें महिला ग्रुप्स भी हैं। और शुरुआत में वो शुरुआत वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाने से लेकर हुई, पर जब वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं वो हर वक्त विक्टिम नहीं रहती हैं, वो काफी सोचते रहती हैं, काफी तय करती हैं, निर्णय लेती हैं पूरे वायलेंस जब चल रहा है उसमें भी, कि उनका क्या डिसीजन होना चाहिए, और वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको सिर्फ थोड़ा सपोर्ट, सहयोग चाहिए होता है। तो एक सामूहिक प्रोसेस में जब हम आते हैं, वो एक दूसरे को हम टेका देना, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट देना, जिससे आगे बढ़ जाएं, हम सब आगे बढ़ पाएं। तो ये एक प्रोसेस रहती है। तो मेरे लिए मैं यही कहूंगी कि बहुत मैं बाय फॉल्ट आ गई यहाँ, अगर देखें तो बहुत स्ट्रक्चर्ड सेक्स पे, हमारा सेक्स एजुकेशन पर काम नहीं है, लेकिन ये हमारा इंटीग्रेटेड है पूरे काम के अंदर। ये मुद्दा पूरे काम के अंदर इंटीग्रेटेड है, पार्ट है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि महिलाओं के साथ हम जब भी अपन मिलते हैं, बात करते हैं, इवन ये लड़कियों में एक एज का पूरा एक है, तो महिलाएं बड़ी ओपनली बात करती है, लेकिन वही छोटी एज की गांव की बहुएं हैं या बेटियां हैं, उनके बीच में एक चुप्पी का माहौल रहता है और उनके सामने छुपाई जाती है कई बातें, और वो छुप छुप के सुनते भी हैं। जैसे कि मैं खुद अपना पूरा मेरा एजुकेशन, आपका पहला इसमें लीजा यही है कि मेरी अपनी एजुकेशन तो ऐसे ही हुई कि वो पूरी सेल्फ एक्सप्लोरेटरी रही,
और किसी ने नहीं बताया कभी भी। और ये शायद मैं जब 25, 26, 24 साल की थी, जब हम ये किताब पर काम करने लगे, तब पहली बार ओपन में हमने बातें की इसको लेकर। तो ये सेक्स एक्सप्लोरेटरी तो आपका 10 साल में, 9 साल में, कभी भी किसी भी साल में आप शुरू करते हो, जब आपको इच्छा होती है कि आप इसको शुरू कर लो। तो यही मेरे लिए एक ड्राइविंग वो है कि हम उस एज के लड़कियों के साथ बातचीत बनाएं जिस एज में चुप्पी हो जाती है इस मुद्दे के ऊपर। थैंक यू लीजा। Thank you, Indira ji. I think we're all so lucky to have you here today. And personally, I'm a huge fan of Sharir Ki Jankari. When I saw the book through Paromita, the illustrations and the way you created those flippable covers to kind of, peel over the layers of the clothing and then the body and then the internal organs. It was so wonderfully done. And I hope we can get that book back in print so that all of us can get copies as well. But before we dive further into all of that, I'd like to just hear from Purvi and Srinidhi as well about their work firsthand. So Srinidhi, do you want to go next? Sure. Hi. So I work primarily on gender, sexuality, and disability. And much like Indira ji, my entry into sexuality education was vis-a-vis violence. So I think, but it has expanded and grown since that entry point several years ago. So in the past few years, we've been working primarily on sexuality, but with regards to disabled women, and making sexuality education accessible for disabled women, and understanding the ways in which sexuality presents itself for women with disabilities. So in this exploration, we see a lot of finding a space in the larger scheme around sexuality for their lived realities, how they experience their body, understanding how relationships pan out for them, and many other things from that perspective, but really centering experiences of people with disabilities through the lenses of how gender and sexuality impacts them when we add disability into the mix. Thank you. Purvi, let's hear about your work as well. Hi everyone, I'm Purvi Yadav. I'm co-founder at Sahas. Sahas in English means courage. The courage that comes from unbiased knowledge, courage to be who you are, and courage to just make informed choices, and most importantly, courage to question. We basically work with adolescents. The area of focus is adolescents of the age group 11 to 15. And we work on them with knowledge building on gender, sexuality, and reproductive health. So the idea is to build their capacity to challenge gender-based violence and form the first form of violence, that is child sexual abuse. Now, so this whole work is very much taboo. We know that comprehensive sexuality education is banned in so many states still now, and adolescent is growing age. And when we were working with them, and there is so much more to it, when there are so many conversations happening, what I've seen always, be it my school education or the young people around me, and still now in the schools, the one thing that is prohibited, or the one thing that is criticized, is asking questions. So through the work of Sahas, our idea is to give the space, provide that space and support system where they can, where the adolescents can ask questions about their body, about the things that matter to most. And I've always seen the work on child sexual abuse as something that happens, and then providing support to the person or some sort of other thing, and also good touch and bad touch. So I know there might be more work that I might not be aware of, but child sexual abuse is much more than good touch and bad touch, and it should start with understanding body. Surprisingly or interestingly, we live in a country where we're just not okay with the body that we are born with, and we're not
we are not allowed to talk about it. So through these conversations, the idea is to have that interaction, have that association with body, understand body parts, understand your own body, explore sex education. So we had basically developed a curriculum that has all the facets of lives of adolescent, and then when we go through it, especially sex ed and sexuality, then we come to the point where they can actually talk about child sexual abuse and learn how they can challenge or how can they just say no to it, you know. And with this work, we've also understood that the thing will not happen just by talking to adolescent. It requires a sustained effort. So we also talk with the teachers, parents, women, and also police, so as to create a holistic. So once adolescent starts asking questions, there's no end to it. There's just no end to it. So the parents and teachers should be, you know, capable enough or open enough or inclusive enough, sensitive enough to answer their question, so that they do not go back into the shell they were. The idea is to give them education around body and sex that I never received, and many of the people that I work with and interact with have not received. So that's what the work that I do at SARS entails. Thank you. Thank you. Thank you. I think it's quite a diverse set of experiences each of us have, even though our sort of agenda or aspiration to sort of provide sex education is a shared one. I'm sure there are sort of unique specificities that inform why we do what we do. And I thought that actually, since the title of this panel is Sex Ed Across Generations, Love, Aaj, Kal aur Parso, I wanted to, I mean, Indira ji, you touched upon this, but I wanted to get each of you to also share what sex education was like for you growing up, whether you had sex ed, and if you did, who provided it and how, and if you didn't, how did the absence of that announce itself or, you know, make itself felt? Indira ji, you did mention that there wasn't really any sex ed and it was sort of a teach yourself kind of a thing for you. But would you like to elaborate a little bit, or would either of the other panelists like to begin? I leave it to whoever feels like answering. I hate putting spot. इंदिरा जी? हाँ, जहां तक ये पूरा एजुकेट करने की बात है, ये मुझे लगता है कि सोसाइटी में इसकी कोई नीड समझी नहीं जाती है कि इसकी कोई जरूरत है कि आप एजुकेट करो सेक्स के बारे में, बच्चों को एजुकेट करें या यंग लोगों को एजुकेट करें। तो इसको क्या होता है कि ये बहुत अलग अलग तरीकों से लोग अपने आप को स्वयं ही एजुकेट करते हैं, या फिर जो पियर्स होते हैं उनकी बातचीत में आपस में जो एक्सपीरियंस आते हैं, वो एक्सपीरियंस एक होता है जिसके तहत वो एजुकेट करते हैं। और एक तो ये बात है। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे राजस्थान में औरतों के ग्रुप में जब औरतें आपस में बैठती हैं, तो उसमें जरूर ऐसे एक देखने में आता है कि उसमें वो अपने अच्छे और बुरे सेक्स के बारे में, अनुभवों के बारे में काफी बात करती हैं, और अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, और उसमें अक्सर हमको ऐसे लगा है कि उनके अनुभव इतने अच्छे नहीं भी हैं, लेकिन जब वो बात करती हैं तो उसमें अपनी कल्पना से कुछ चीजें जोड़ती हैं ताकि उनको उसमें अच्छा लगे। तो वो जो एक कल्पना से चीज जोड़कर बात करना, जिसमें वो एक तरह की मैसेजिंग है। ये मैसेजिंग है कि अगर इस तरीके से पूरा सेक्स उनके लिए, या ये पूरा जो प्लेजर है और जो अपनी इच्छाएं हैं, उसको एक्सप्लोर करना किस तरीके से ठीक होगा, ये डायरेक्ट हम खुद भी बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम खुद भी बात नहीं करते हैं, तो जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो थोड़ा एक्सेजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के, उसमें मिर्च मसाला मिला के और उसको तड़का लगा के ना उस तरह से पेश करते हैं जो कल्पना से करते हैं। तो ये एक तरीका भी है एजुकेट करने का या बताने का कि एक्चुअली उनके लिए क्या चीज अच्छी होगी, जो डायरेक्ट नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि एक तो ये भी बात है कि इसका एक इम्प्लीकेशन है डायरेक्ट कहने का, कि अगर औरतें, लड़कियां अगर इस बारे में डायरेक्ट कहें तो ये कहा जाता है कि तुमको ये नॉलेज कहाँ से मिल रही है, मतलब तुम कोई खराब लड़की हो या पहले किसी से रिश्ते रखे हुए हैं। क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा ये भी है कि जब आप रिश्ता रखो तो एक ही व्यक्ति से रिश्ता रखो,
और अगर इसका मतलब आपने ये नॉलेज कहाँ से गेन किया, तो वो बताने में औरतों का, उसकी शेयरिंग करने में, क्योंकि रिश्ते हमारे इतने डेमोक्रेटिक नहीं है, रिश्ते में बहुत ज्यादा हायरार्की है, तो वो बताने में, वो अगर हम किसी और का भी नाम लें जो औरतें हैं या लड़कियां हैं, हमारे पीयर्स हैं, तो वो भी एक काफी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि ये इस बातों में टाइम खराब कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी कहावतें और मान्यताएं बनी हुई है कि, और औरतों के लिए अगर आपको मैं कहूँ कि एक अच्छी बात करने की स्पेस कहाँ है जहां वो इन चीजों पे बात करें, तो पहले मतलब जब टॉयलेट्स नहीं थे, तो जब औरतें जंगल जाती थी वो अपना निपटने के लिए, पॉटी जाने के लिए, तो वो उनके लिए, आपको मैं सच बताऊं कि मैं गांव में जब रही अपनी यंग एज में 20, 21, 22 साल में, तो हम उस समय में उनके साथ, हमें मन नहीं था पर 4:30, 5 बजे उठ के जंगल चले जाते थे पॉटी करने के लिए, ताकि वो बातचीत हो पाए उनके साथ। कैन यू बिलीव कि वो स्पेस एक बातचीत की स्पेस थी, या वो जब जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं या हैंडपंप से पानी लेने जा रहे हैं। अभी सिनेरियो बहुत बदला है, पहले पूरा जो जिंदगी की कठिनाई थी, इसलिए क्या हुआ है कि ये जो पूरा एजुकेशन का जो स्पेस है, फॉर्मल स्पेस नहीं बन पाया, ये एक इनफॉर्मल स्पेस में इस पे बातचीत करना, समझ बनाना, सपोर्ट देना और आपस में बातचीत करके भी मजे लेना। एक और जगह होती थी जो मिडिल एज औरतों के लिए, वो है कुएं, जहां बैठकर नहाते हैं, सामूहिक रूप से नहाते हैं, पानी निकालते हैं, एक दूसरे को नहलाते हैं, एक दूसरे का पीठ मल रहे हैं, एक दूसरे के लिए पानी निकाल रहे हैं, वहां दोस्ताना बन रहा है, उस दोस्ताना में कई सारी बातें हो रही है, मजाक हो रही है, और उस समय में वो ये भी एक दूसरे की बॉडी की जांच भी कर ले रहे हैं कि भाई ये कौन सेक्स कर रहा है, किसका अच्छा है कि नहीं चल रहा है ठीक, ये सारी बातों का स्पेस इस तरीके से एक रहा है। तो ये मेरे अनुभव में ऐसे रहा है कि ये एक बहुत इनफॉर्मल स्पेस रहा, और जब हम भी बात करने के लिए सोचने लगे तो एक ये सेमी इनफॉर्मल स्पेस को ही शुरुआत में हमने इस्तेमाल किया। हमारे बीच में बहुत एज गैप था, वो जो मिडिल एज औरतें हैं उनके साथ बात करना ज्यादा आसान था, पियर्स के साथ में मुश्किल था जिनको जानते नहीं है। तो जैसे पूर्वी ने कहा कि वैसे आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो और उसके बीच में आपने इसको भी आपने शुरू किया, तभी ये हो पाता है कि पियर्स का एक ग्रुप पहले बने ताकि वो कंफर्टेबल सेफ स्पेस लगे जहां बातें की जा सके इस प्रकार की। Thank you. I think it's so true that for so many people, in the absence of formal sex education, these informal spaces of intimacy and friendship and sort of places where you feel comfortable being vulnerable are so valuable, actually. And I wish we could do more to cultivate those spaces. I feel like, you know, modern life and technology, and particularly during the pandemic, there's been such a dearth of that sort of shared intimacy, non-sexual intimacy, but that allows for this type of sharing and discussion and honesty. But sorry, I should not ramble. I want to hear from our panelists. So Purvi, do you want to tell us about what sex ed was like for you growing up, if any? So for me, I have studied in one of the most wonderful army public schools of India. I'm a science graduate. I've done pharmaceutical sciences, but very interestingly, nobody taught me about sex. I was a very, very curious child, and I think I'm very curious at the moment. Love learning about things, but I was so grossed out by the reproductive system, and it had so many difficult terminologies. And I still remember that there was a question of menstrual cycle, and I was like, I just can't write it because there's so many of it. But over the course of time, I had encountered a lot of things that made me wonder what happened, what would have happened if I knew about this, or things could have been better. So I remember when I was in 8th and 9th, and we were sent to a sports event, and all the girls were supposed to stay together in a big hall, sort of a dormitory, and I was not comfortable changing clothes. So everybody is like, it will be better if I say it in Hindi. Jo tera hai wo mera hai, kya farak padta hai? And people were like, they were tying to me and they were changing, and I was just not okay with it. And there were so many girls, and the girls were taking bath together, and then I was very scared, and I was not okay with it.
So I used to, go at the corner somewhere where nobody is there, and then, change or take bath at the end of the day. And also because my father is from a village in Kushipura, we used to go for vacation. So what I used to see is that every year, if most of the women had child, every year they have a newborn. And when I was in ninth, and I used to see that the girls of my age used to get married and they were having babies. And I just didn't know. I used to think, what is really happening? How can you keep having babies? I mean, what is happening? And then there is also movies like, the I remember watching this song that was shared on the social media also. Chunri ke piche kya hai, choli ke piche kya hai, aur chunri ke aage kya hai, something like this. And I used to love that song because Madhuri Dixit used to be my favorite. And I'm very bad at singing, but I used to sing it aloud. And my mom was so horrified. She used to always, I'm very sure she might have slapped me also, but I used to sing it, and with loud, because it used to irritate my mom, and also I used to love it. And then I happened to see Hum Dil De Chuke Sanam, and then this woman, this actress Aishwarya Rai says, when we kiss that, oh my God, I'm pregnant too. So I was like, I'm in ninth, and I know that's not how you get pregnant. By kissing you don't get. I don't know how you get pregnant, but definitely not by kissing. So these were the messages that used to be there, and I used to be always wondering, what happens, what actually does. And because in 8th and 9th I was in KV, these girls used to talk about, they have everything, out and open. So if they're Bhabhi, if they have a new bride, they used to discuss the first night. And I have heard such things that when I think of it now, I was like, my God, they knew so much. And I just remember being horrified, ashamed, as if something bad is happening. And if I would have got that sex ed education, my experiences, my probably relationships, and also what I see around with the young people that I work with and counterparts, their life would have been so much better if somebody would have told us what is actually sex, rather than getting messages like kissing could lead to being pregnant and scaring the hell out of us. So yeah, that was my experience. Srinidhi, what about you? I think for me, of course, I didn't have any sex ed, and I don't think there was a conducive environment for it at all. But I think one of the things that really stands out for me, even as an adult who works on sexuality education, is that how much of the information, even that we perceive that if we received as children, we would be different, is still related to the body, right? And understanding our own body. But I think that as part of some of the experience of working on sexuality education over the years, one of the things I think that it really reinforces that is missing in when you don't have sexuality education is the understanding of agency at all, right? And you have no sense, the sense of self is not necessarily built enough, especially for children. Right, so you take that on through your adolescence and to your adulthood, where you really struggle with within relationships about can I say no? Is that even possible? And understanding just the ramifications of being in relationships was so hard for me because of not having that conversation with people or not having spaces to have open conversations, right? And as an adult, I think one of the things that I discovered, because I acquired my disability much later, was the fact that there was no disability-based conversation when it came to sexuality education, right? So because even within sexuality education and the parameters that we have conversations around, there is an understanding about a lot of sex and pleasure in many different ways. But when you inhabit the world with a disabled body, it's possible that you might not have the same visions or the same spaces to have those conversations, right? So I remember very early on when I began to have a lot of chronic pain, that I was discussing with a friend
at that time that, that the pain is too much. I don't think sex is possible, etc. Right? And the response was, you will get over it. Right? So even within our spaces of understanding, we still don't have narratives around disabled bodies experiencing it. Right? So I think even as an adult, I feel the lacunae in the conversation around sexuality education, because of the fact that the very many nuances that inhabit it now, sometimes in practice we still struggle and falter to find that space, right? And I think relationships and just how you build boundaries, right, which is such an integral part of sexuality education, and what that implies when we speak about it in nuanced ways from childhood, right? And how that perpetuates, or how that enables a more vibrant sense of self, allows for more confidence in the fact that my body can't do the things that a non-disabled body can do, but there's nothing wrong in that, right? And I think that conversation shifting, even as an adult, I still feel we like that's one of the perks of having sexuality education, of working in sexuality education spaces, is that adults also often have these need for these spaces, right? Which is also what Indira was saying, right? That the adult women, even today, might need those spaces to talk about what is going right or wrong in relationships, or how we work through those relationships, what queer relationships or imaginations look like. What if one person is disabled in the relationship and the other is not, right? So the myriad of things that you encounter, right? Or what if you enter a relationship and it's long term, but you become disabled and you're not able to have the kinds of things that you have, and you have to renegotiate pleasure and body and what that looks like in that relationship all over again, right? So I think the foundations of sexuality education have so much ramifications on how we are in the world, right? And I think that is something that we often don't hear enough about, right? Because of the fact that it's like for many people who are working with children, we struggle to tell adults that this is not just about the child knowing how their body works, which is good and important information, but it is more about how this child navigates the world, right? So, yeah. I think for all of us, in many ways, we do the work we do to kind of create the spaces and resources and access to information that we wish we had, in a way. But I'm also eager to hear about the learnings that may have surprised you, or just the learnings from the communities that you work with. Like, I think we come into work with, certain issues we want to tackle, but then it's also quite a wonderful sort of two-way street within that space or workshop or classroom, or however you're conducting your work, right? I'd love for each of you to share the sorts of aspirations and curiosities that you witness from members of your communities. What do the young people you're engaging with want to know more about? What do they want from their sex education? Who wants to go first? Purvi? Okay, I'll go. So, because most of the work that we do revolves around adolescents, and I think one thing that I've learned from them is the curiosity part of it, the ever learning need. And once, it's like once you open them up, just give them space, it's like you become Google for them. So they will ask you everything, and they think that you know everything. So I remember lot of sessions on sex ed. So sex ed is like third workshop in the curriculum. And I was just telling them about there's a movie screening, and then we have conversation, and then I sit down and say, if you have questions, ask away. So I have got such questions that has surprised me, because despite the fact that we work on gender sexuality,
there is still that mindset that says, my God, the 12-year-old might not know about it. So I've been asked, this boy who asked me, we talked about consent in one of the sessions. And then he said that if the girl has given the consent or not given the consent, and somehow she gets pregnant and she's just 13-year-old, and the family wants to do the abortion in the name of the honor, what do you suggest what will happen? And then there was this person, he is just very cute 12-year-old, and he says that, I was going to the park, and then I saw this very beautiful lady with very bold makeup, and she said, do you want to have sex with me? Was she a sex worker? Should I have gone with her and did so? And these people are and when they ask about because of Hindi serials and all, they've come to know what transgender is, the rough idea of it. And then, but it is so weird because we were talking about body parts, and then one of the persons said, this is male, female, what about transgender? Have you heard about LGBT also? So basically, because they ask questions, they are open enough to ask questions, it helps us learn more, answer questions better. And also I think for me it is important to see that they can ask the same questions around it. So I remember, I just want to share one more example. So we did this curriculum in government school, and the principal sir was supposed to come at the last workshop, and I didn't know that he will ask questions. So it was more like giving certificate, just saying that, wow, well done, you have done it. And then the principal asked, and it was so fascinating that the first person who got up shared everything that he has learned about sex, talked about consent, and then said, why don't we, every one of us has this education, because you're just doing for 8th A. What about the other people? So it is, I think with that also, and also when we work with women, I remember there was this big, it is called Chaupal. These women could not come to the place of the workshop. So we thought we'll go there and we'll facilitate a workshop. And I said Yonikta, and this word Yonikta in front of everybody. And it was an open Chaupal, and people all around it. And there was this person who, drove the car and sent it there. So he was looking at me as if I don't know what I've said. But at the end of the workshop, this lady brought her 12-year-old, and she said, I have lived this life without knowing all this. I didn't even know that we can talk about sex, we can talk about pleasure. Why don't you guys do workshop with these? Hamari to life ho chuki hai. So I don't know. I mean, with every person that we meet, we have these conversations. Something new always comes up, and it basically, I think it is mutual. I have learned so much. And the way I see things, the way I've facilitated, and the way I've interacted my real in the life beyond sessions and beyond social work has changed. I have had communication with conversation about LGBT, about sex ed with my dad, and he's very horrified still. But I do have these conversations. So he just small thing. It's very funny actually. So he said something, and I said, Dad, this is very sexist of you to say. He paused and he said, how the hell you bring sex in everything that you say? So this is how the conversation go about in our home. And yeah, so for me, it has been very interesting that I could actually incorporate this in my own life. That's the biggest takeaway that I've taken from the work that I do. Thank you. Srinidhi, do you want to tell us about the aspirations and curiosities of the people that you educate? I think in my experience of working with disabled women in particular, one of the key things that we really see is that a lot of the information that is actually existing on sexuality education is often in a visual format. Right. So extensively, even for instance, like even though it was not satisfactory, we did learn about the reproductive system in school, but it was usually most of the information that's often provided is visual.
So it's an image of the body, let's say, right? So, and this often alienates a lot of blind women, low vision women, etc. So one of the things that really is prevalent is the need for information, right? To understand and sort of accept some of the information that is provided to them. But I think one of the things that is particularly true for disabled women is that because of the experience that they have, and this is true for, I suppose, all disabled bodies, that when their navigation of the world is often done through the medical system, so their body is heavily medicalized. And it is of course a site of trauma because of the fact that it is assumed and understood that the disabled body is not enough. It is lacking in somehow, right? So I think that interaction with the world often means that we start a few steps behind when we begin with disabled women, because we have to re-navigate and renegotiate our relationships with our bodies. Right? In a world where disabled bodies aren't really seen, we hide disabled bodies away, we are ashamed of disabled bodies. So having disabled bodies thrive and be happy and look dressed and decked up is often really low. So you hear from disabled women across the country, but specifically in spaces where they have not been allowed to, say, get dressed up or have occasions to dress up, right? So just the re-navigation of what you can do as a disabled person is something that many of them have begin to do through the navigation of sexuality education, but also understanding that their bodies are desirable. And one of the things that, because we hear, and there is a lot of social, legal, and political context under which disabled women are often not seen as mothers, we hear from very young that both doctors, parents, society in general is really driven towards ensuring that disabled people don't become parents, right? So when disabled women want to have babies, you often hear stuff from doctors, right? So in that system of existing, where motherhood is not seen as something they can have, where disabled people aren't seen as eligible for marriage, all of these become places of desire, places of wanting access to sex, and imagining that this is a point from where it is made possible. And I think that entry point really changes for disabled women in particular, because of it being the only entry point that they see often, right? So I think that those aspects and aspirations really seep into our conversations. We hear a lot about fighting the stereotype that I can be a mother too, and I can also look after another person, because in relationships, because of the gendering of disabled women's bodies, and the idea that women are primarily caregivers in a relationship. So for a disabled woman, she isn't seen as somebody who can provide care, right? So then relationships itself are taken off the table. And I think that makes a lot of renegotiating to understand to understand what we can do in relationships, right? So we don't have to aspire to the non-disabled quote unquote normal, but how do we navigate relationships where there is care and love, etc., which doesn't mean that I do everything that is expected of me, but how do I manage to navigate that in relationships is often things that we end up speaking about, because these are realities of disabled women's lives. Yeah, I think that it's so important for sex education to sort of be, contextually sensitive and nuanced, and really be mindful of how varied the needs of particular communities can be, right? It isn't really a one-size-fits-all kind of thing, sex education. And I hope that in our own work, we can find ways to be more inclusive of sort of,
the diversity of experiences in this space, because I think to a large extent, still in the official context in which we receive any information about sex or sexual health or rights, it is still very heteronormative, very ableist, in many ways, very patriarchal, very sort of, even the law, the fact that marital rape is still legal in India, the law suggests that sex is for women at best a duty and at worst a site of violence. And that's just how it is. I feel like we need to really do what we can to ensure that our sex education doesn't perpetuate existing systems of exclusion and oppression, and instead interrogates those, right? We done the need for sex education to be, inclusive of the experience of people with disabilities, of the queer community. Purvi touched upon that, but I'd love to talk more about those things as well as about pleasure. But Indira ji, let's hear from you about the curiosities and sort of experiences. I love the story you told yesterday about how the men in one of your workshops doing the body mapping exercise had even created these affectionate names for their penises. Tell us. राइट तो मैं दो तीन इश्यू में मैं बात करना चाहती हूँ कि ये जो पूरा जो पूर्वी ने बात की थी कि साइंस स्टूडेंट थी और उसका जो एक्सपीरियंस रहा, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने उस समय में जब मैं 22 साल 21 साल की थी और वो किताबें खोल के देखी साइंस की, तो वो हमें इंफॉर्मेशन उस तरह का नहीं देता था जो इंफॉर्मेशन की हमें चाहत थी। तो तो जब ये जो लाल किताब आज दिखती है, इसका सबसे पहले तो इसका जो पहला फॉर्मेट बना था वो साइंस की किताबों से ही ड्राइंग्स लेके हमने कोशिश किया था कि सरल में उसको लैंग्वेज हम सरल इस्तेमाल करें, ड्राइंग्स वहां से उठाएं। और ये कॉन्टेक्स्ट की भी बात आपने करी है लीजा, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब उस किताब को गांव में लेकर गए तो गांव में औरतों ने उस किताब को टोटली रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या किताब बना दिया, इसमें तो नंगी औरतें बिठा दी है, नंगे लोग बिठा दिए, इससे तो हम सबकी बेइज्जती हो रही है, तो सबको कपड़े पहनाओ। और जो ये फ्लैप उठाने वाला जब पूरा आया तो इसमें जो हमारे ग्रुप में जो बेस्ट आर्टिस्ट थी मलिका विरदी, ये एक्चुअली जो ड्राइंग्स थे, जो पूरा फॉर्म ड्राइंग का निकाला वो मलिका के उससे निकला, उसकी पूरी उसको श्रेय जाता है। तो ये जो पूरी हैंड रिटन बुक है, इसका अगर आप देखेंगे हैंड राइटिंग मेरा है और ड्राइंग्स मलिका के हैं। और ये जो पूरा हमने सरल हिंदी में काम किया, औरतों ने आइडिया दिया कि पहले घाघरा पहनाओ, सबको ऊपर कपड़े पहनाओ। उनके लिए लॉजिकल था, बॉडी को समझना, ये शायद हेल्प करेगा बाकी लोगों को भी। आप कपड़ा उठाओ तो अंदर कैसा दिख रहा है, फिर बॉडी की चमड़ी को हटाओ तो अंदर कैसा दिखता है, फिर हम बच्चादानी तक पहुंच गए तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये जो पूरा माहवारी का प्रोसेस फ्लैप में समझाया है और उसके आगे भी, और फिर बच्चा कैसे ठहरता है। हमने एक्चुअली सेकंड थर्ड बुक भी डिजाइन करके रखी थी कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको बच्चा ठहरेगा तो क्या होगा, बच्चा नहीं ठहर रहा तो माहवारी मेंस्ट्रुएशन आएगा, तो मेंस्ट्रुएशन की फिर साइकिल कैसे होगी। तो अगर आप उस रेड किताब को देखो तो औरतें ऑलरेडी अपना, एक्चुअली हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ सिस्टम बनाया है लोगों ने। औरतों ने अपना वो रिकॉर्ड रखने का एक सिस्टम बनाया था, वो चांद के साथ मैच करती थी। पूनम है कि अमावस्या है, पूर्णिमा और अमावस के बीच में कौन से दिन में आपका आ रहा है। कई औरतों ने अपने दरवाजों के पीछे लाल खड़ी से मार्क करके रखती थी वो कि पूनम के 5 दिन बाद, अमावस के 6 दिन पहले। तो जब हमने वो सिस्टम को समझ लिया आपसी पूरे इसमें, तब हमें ये समझ में आया कि अगर हम उस मेथड को ले लें जो हमें कोई साइंस की किताब में नहीं मिल रहा है, वो औरतों का मेथड था कि वो कैसे अपना पूरा साइकिल को माप करती हैं। उनको पता है कि आपको बच्चा कब रहता है, और आप अगर वो 3-4 दिन जब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, क्योंकि तब ये साधन आ गए थे हालांकि आपको, तो ये साधनों का उपयोग किए बिना भी वो अपने 3-4 दिन छोड़ के रिश्ता रखेंगी
तो वो रिश्ते में वो फ्रीली रिश्ता रख सकती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते हैं। और हम एक अपने को प्लेजर लेने के लिए भी ये जरूरी है कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो या किसी तरह की हमें प्रॉब्लम्स नहीं खड़ी हो रिलेशनशिप में, तो खासकर सेक्सुअल रिलेशनशिप में। तो इसको समझना इतनी बारीकी से कि ये बहुत आसान काम नहीं था, पर इसको हमें इन औरतों की तरफ से ये बात आने से समझ में आया। तो ये जो ग्रामीण महिलाएं थी, तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ग्रामीण था। एक तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपने एक और एग्जाम्पल दिया कि जो मेरे जैसा ही तेरा मेरा एक ही है, तो एक्चुअली जो वो हमारे औरतें बोलती है सबकी एक ही माया है, मतलब हमारी बॉडी एक सी है, तो इस बॉडी से आपस में क्या शर्माना। तो वो शर्म झिझक को तोड़ने के लिए ये इस तरह की जो बात है कि सबकी एक सी माया है। और कई औरतों ने ऑफर किया, आपको ताज्जुब होगा कि वो उनकी बॉडी को देख के हम अपनी बॉडी को समझ सकते हैं कि हमारा शरीर कैसा है। और ये कम से कम 3 महिलाएं मैं जानती हूँ जो अपनी शरीर के जरिए हमको सिखाने के लिए तैयार थी कि हमारा शरीर कैसा है। और बहुत मुश्किल था ये समझना कि हमारे शरीर में बहुत सिंपल चीजें भी पता नहीं थी कि हमारे शरीर में वास्तव में योनि के लिए एक अलग रास्ता है। लेकिन औरतों को ये तो पता था कि औरतों को मजा किस चीज से आता है ना। तो वो अपना जो क्लिटोरिस का उनको अच्छा खासा आइडिया था कि आपको अगर अपना आनंद लेना है तो आपको ये किस चीज से हमें आनंद आता है। तो ये मुझे लगता है कि ये नॉलेज थी औरतों में, और शायद वो आपस में बातचीत करने से उनमें आई। तो ये जो हमारा आपसी बातचीत करना है, ये वर्कशॉप के जरिए करें, कैसे भी करें, उसमें वो स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। एक तो मुझे ये लग रहा है। दूसरा, जो पूरा रिलेशनशिप में एक है कि औरतों से ये अपेक्षा की जाती है रिलेशनशिप में कि समर्पित हो जाओ। मतलब आप समर्पित होने का जो बहुत ज्यादा रिलीजियसली भी कहते हैं, और आपकी जब शादी होती है तो शादी का जो पूरा रिचुअल है उसमें भी आपको बताते हैं कि आपको समर्पित रहना है। मतलब आपको यौनिक रूप से समर्पित रहना है, मतलब आपको अपने ख्याल किए बिना सामने वाले का ख्याल ज्यादा रखना है कि उसको प्लेजर हो, उसको आनंद हो। तो इस तरह का जो पूरा बात है, इसको एक चैलेंज देना काफी जरूरी है कि ये समर्पण की बात से बाहर निकलकर इक्वली कैसे ये होगा। और अगर आप उस लाल किताब में देखेंगे तो बहुत ही छोटा एक चित्र है जिसमें मेल फीमेल, जहां मेल का चित्र आ गया कि शरीर, आदमी का शरीर कैसा होता है, उसके नीचे आदमी को नीचे लिटाया है एक पोजीशन में, औरत को ऊपर लिटाया है और कहा है कि ये पीरियड में अगर आप रिश्ता रखो तो बच्चा होता है। तो उसमें वो मतलब वो जो है मैं ये नहीं कहती पहली बार हमने किया ये, लेकिन ये समटाइम अपने आप में एक प्रोजेक्ट के अंदर पहली बार था, और उस प्रोजेक्ट के अंदर पहली बार होने से उसका विरोध बहुत ज्यादा था। तो मैंने अपने पहले भी एक बार बात में बताया है इश्क एजेंट ऑफ इश्क के उसमें कि सारी किताबों को इकट्ठा करके सरकार ने जलवा दिया कि ये औरतों को खराब करने वाली चीज है। तो ये मैं अभी फिर से मेंशन करना चाहती हूँ इस कॉन्फ्रेंस में कि जो सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं इतना आसान नहीं है। उस समय में भी किताबों को जला दिया था, आज भी बात करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी उसकी। और ये भी एक बात है कि हम जो है, अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हमको बर्थ कंट्रोल करना है या हमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ में भी जब हम बात कर रहे हैं, एजेंसी की बात तो बहुत ही दूर की बात है। जैसे कल भी श्रीनिधि से मैंने सुना कि एजेंसी की बात करना ही एक काफी डिफिकल्ट चीज है। तो और अगर हमारे कोर्ट्स ऐसे डिसीजन ले आएंगे कि आप औरत, मैरिटल रेप होता नहीं है, अगर आपके साथ पति ने रिश्ता बनाया, आपकी इच्छा नहीं थी, तो आपका दायित्व है आपको समर्पित रहना है। तो ये जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि दायित्व और इससे बाहर निकलना अभी काफी मुश्किल है क्योंकि अभी पुराने मूल्यों को वापस स्थापित किया जा रहा है, तो इससे बाहर निकलना मुश्किल है। तो ये एक लगातार की स्ट्रगल रहने वाली है। और जो हमारे काम में हम लोग करते हैं, हमारे जो यंग लड़कियों का ये आइडिया था कि एक वर्कशॉप करवाओ कि हमको अपने इस पे सब पे बात करनी है और आप लोग मत रहो। तो हमने पूछा क्या आप बहुत इंटरेस्टिंग था वर्कशॉप। एक लड़के ने वर्कशॉप लिया लड़कियों के ग्रुप के साथ में,
सेक्सुअलिटी की बातें, जिसमें पूरा दोस्ती, और लड़कियों ने उसको नाम दिया सुलझती उलझने, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे मन में बहुत उलझने हैं चीजों को लेकर, दोस्ती, रिश्ते, प्यार, शादी, ये वो, और आपको कोई पसंद आ रहा है, पसंदगी नापसंदगी की बात है, हाँ या ना कह पाने की बात है, जिनसे दोस्तियां हैं वो लड़के नहीं समझते हैं, हाँ क्या रह कहें ना कहें वो समझ नहीं रहे, तो वो बहुत उलझी हुई लड़कियां लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये करें, तो हमने कहा क्या हम एक लड़के के साथ करवा सकते हैं जो लड़कों के साथ काम करता है एक्चुअली। तो जब उसने, वो इतनी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप हो गई कि ये मैं इसका भी नाम लेना चाहती हूँ, सूरज पवार ने ये वर्कशॉप लिया, और इतना अच्छा ये वर्कशॉप रहा, लड़कियों ने जिस तरह खुल के पूरी बात की, और लेकिन एंड ऑफ द डे उनको ये समझ में आया कि सुलझती उलझने मतलब उलझन सुलझेगी, बातचीत करेंगे, लेकिन उलझन सुलझन चलती रहेगी, मतलब उलझना बंद नहीं होगा इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि पूरा जो प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, पेट्रियार्की है, हेरार्की है, मुद्दे पर चुप्पी है, और आपका ये सारे वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं, समर्पण के, परिवार को बनाए रखने के, और शादी में ही सब कुछ देखने के, तो ये अभी बहुत आसानी से खत्म नहीं होने वाले हैं, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत मुश्किल है, अभी कई साल लगेंगे इसको खत्म होने। तो ये स्पेसेस जो क्रिएट हो रहे हैं, तो एक तो मैं ये वर्कशॉप कह रही हूँ, एक वर्कशॉप में जो आप लीजा कह रही हो, मैं जरूर बताऊंगी कि हमने बॉडी मैपिंग किया था, लड़के लड़कियों की शामिलात वर्कशॉप की थी, तो हमने अलग स्पेसेस भी हैं लेकिन शामिल स्पेस भी हो, क्योंकि लड़के समझेंगे कैसे, तो ये लड़के लड़कियों के शामिलात में जब बॉडी मैपिंग हुई तो लड़कों के ग्रुप अलग हुए 2 और लड़कियों के अलग ग्रुप हुए। एक्चुअली बॉडी मैपिंग किया तो हमने देखा कि लड़कियां इतनी अनअवेयर नहीं है बॉडी के बारे में, वो काफी जानती हैं, तो वो और उसके लोकल नाम है, मतलब इतना सुंदर बॉडी मैपिंग होता है ना, अगर अपन करें तो रूरल अपने एक ही अंग के वो 5-5, 6-6 नाम आपको बताएंगे, उनको पता है कौन से बॉडी के पार्ट से आप कैसे प्लेजर के बारे में बात करो तो कई चीजों में प्लेजर निकल के आता है, मतलब आप बहुत खुश हैं और आपके पैर अगर नाचने का मन कर रहा है आपको, डांस करने का, आपकी हैप्पीनेस में, तो आपके पैर भी उसमें शामिल है, मतलब ये जो पूरा हमारे शरीर को योनि में स्थित करना ही गलत है, अपने आप में इसको, इस फ्रेम को हमें थोड़ा वाइडन ही करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों ने कहा हमारा दिल जोर से धड़कता है और हाथ कुछ बोलते हैं, तो आपका पूरा बॉडी कुछ कहना चाहता है, जब आप हैप्पी हैं, आप प्लेजर में हैं, और नॉट ओनली सिर्फ आप सेक्सुअल एक्ट में हैं, पर उसके अलावा भी हम एक सेक्सुअल फीलिंग लेते हैं उसकी, तो उस सब के बारे में ये बात करना, तो मुझे लगता है, तो बॉडी मैपिंग में हमने यही देखा कि लड़कियों के भी कई नाम थे, पर लड़कियों की लड़कियां अपने को डिस्कनेक्ट करती है बॉडी से और मन से, इसके ऊपर हमें काफी काम करना चाहिए कि हमारा मन और हमारा दिल और बॉडी को हम एक साथ कैसे लाएंगे, और बहुत कम समय के लिए लाते हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो वो उसके ऊपर एक काम करना, सोचना हमें काफी जरूरी है, और ये जो कनेक्ट बनता है लड़कों का बड़ा कनेक्ट है, तो लड़कों के जो मैप बने खूब अच्छे, उन्होंने मैप बनाया बॉडी का, और हमने देखा कि वो अपने लिंग के लिए काफी तरह के उन्होंने नाम रखे, उसको कोई बबलू कहते हैं, कोई पप्पू नाम रखा कोई उसको कहते हैं पुट्टा, कोई कहते हैं छोटू, और उसको बड़े प्यार से कहना, मतलब हमें ऐसे लगता है जैसे जब वो नाम बोल रहे हैं तो जैसे आप बच्चे को सहलाते हो, प्यार करते हो, दिल से लगाते हो, ऐसे शायद वो अपने बॉडी के इस पार्ट के बारे में सोचते हैं। हम औरतें ऐसे बहुत ही कम सोच पाती शायद इस तरीके से, अगर हम, मतलब हमारी स्पेस भी नहीं है, हमारे माइंड में भी कैसे ये आएगा कि हमें इस तरीके से हम प्यार कर सकें अपने शरीर को, अपनी बॉडी के साथ एक इस तरीके का रिश्ता बनाएं, तो ये एक मतलब इक्वल सोसाइटी के बिना आना बड़ा ही डिफिकल्ट सा काम लगता है, तो ये मुझे लगता है कि और ये हमें अलग वर्कशॉप भी कर रहे हैं श्रीनिधि के, कल बातचीत से मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है, पर हमें इंटीग्रेट करना चाहिए हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, सेमी स्पेसेस और इनफॉर्मल स्पेसेस और बातचीत और फिल्में और संगीत और सब में शामिल करके, और साहित्य, इन सब के साथ हमको इसको लेके कैसे हम आगे जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। थैंक यू। शायद ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, सॉरी।
Leeza? I was disconnected briefly. Can you hear me? I'm so sorry. I've had this, like, neither my Wi-Fi nor my hotspot seems to be working today properly. I'm really sorry about that. But I do believe that we're actually approaching our question and answer timing, or have already entered it, even though I have so many more questions I want to ask. But thank you for everything that we've covered so far. Shall I dive into the questions? I wanted to ask you all about, your sort of vision for the future of sex ed, and the sort of data that you wish we had more access to, or the data that's lacking. Obviously, pleasure is something that I wish sex ed covered more, and I wish it didn't focus so much on only preventing negative experiences, but rather also, envisioning the ideal experience. And so perhaps we can talk a little bit about that more in our answers to the Q&A. There's quite a few questions, and I know that each of us has quite a lot to share. So how about we just have one person for each question? Like, whoever feels like answering can go ahead, but I don't think we'll get through more than two, maybe, if everybody answers every question. So could you just indicate if you feel inclined to answer? And if there's a question directed at someone specifically, I will say so. I'm just looking at them in the box. Okay, so Sumedha asks, to all panelists, in your experience, do you find violence to be the most important lens to sex ed for adults or children in the context where you work? I imagine that that lens affects the context or the way sex ed is delivered significantly. Trying to understand whether other sex ed lenses are also needed for Indian women and kids. Also, is violence and perhaps control over reproductive decisions the most common approach lens to sex ed in India? Would anyone like to take that question? I can go if nobody else. Yeah, please. I think actually in my experience, the most useful lens to use while talking about sexuality education is consent and privacy. I use those lenses in the work that we do. So we talk about consent in everyday life, as well as in romantic relationships and other relationships that are there, and speak about how privacy is in many ways affected by gender, sexuality, disability, etc. So to us to use these two to combat with each other. Violence is the lens that's preferred most by, I think, institutions in the country. And I think in the past, it has in many ways worked for a lot of us, because it's how we came into the space through experiences of violence, etc. But I think it has been very limiting to enter it from an experience of violence, because one of the concerns remains is that when we begin to speak about when the entry point is an act of violence, often we get stuck there, right? Because it's all consuming in terms of how our bodies interact with violence and the kinds of multiple everyday trauma that exists because of violence. And this I'm saying especially in the context of disabled women's bodies. But one of the things that it is real is that violence is the entry point that has worked because of the fact that there is experiences of violence that we need to really go through in order to be able to have the other conversations. But I think that steering the conversations away from violence and looking at consent and understanding how that manifests in relationships, understanding how relationships are seen and perceived by people, right? And this does not have to be only adult romantic relationships, right? It can also be parent and child relationship and how consent features there, right? How consent features between the disabled body and the caregiver, right? So, or how it features between the teacher and the student, right? And understanding how power plays a role in consent and how the other systems are impacted on in consent has been the most useful lens for me.
right? And I think that a lot of organizations over the years are moving towards not using violence as the lens, because it doesn't always support the vastness that we want to be able to cover. And like Indira said, as well as what Leeza was saying about the fact that our hopes is that we reach the point of agency, right? And a sense of self and all of the other things that encompass sexuality education. So it often feels limiting to begin at violence. So other entry points are useful, but a lot of the reality is that we end up there and we are provided in schools and colleges the entry point of violence. And then often sexuality educators and trainers use that entry point and steer away from it and come at it from a more holistic perspective. Thank you. I think there are a few questions that touch upon sort of how does one understand what is age appropriate when a young person is curious about sexuality or the body. So there's one question from Gunja, says, my 6-year-old male child has started showing immense curiosity and seeing a female's body, especially a female's private parts. I tried showing him a video on a boy and girl's body, but he keeps on asking me to show my chest area and between the legs. How do I handle this? There's another question that says, while talking about SRHR to adolescent girls 12 to 14 years, where do you draw the line? SRHR is very broad. How do you understand what information is at most required? So would anyone like to talk about sort of how to handle the question of what is age appropriate and how to provide answers that are age appropriate without shaming or sort of stigmatizing that curiosity or question? Anyone? I can go. I thought Indira ji might want to say. लीजा, मैं सिर्फ श्रीनिधि ने कहा उसके आगे एक दो बात मैं जोड़ना चाहती हूँ कि, और साथ में मैं ये भी बात मैं कहना चाह रही थी कि सॉरी, हाँ, एक दो चीजें कि जो पहला सवाल जो सुमेधा ने पूछा कि वायलेंस पे बात करना, वायलेंस पे मेरे ख्याल से काफी बात हुई है रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे श्रीनिधि ने भी कहा कि जब हम उस पर बात करते हैं तो जो टाइप ऑफ केस वर्क है हमको उसको देखना पड़ेगा। जब हम एक तरह से डेटा की पूरी कॉन्फ्रेंस डेटा को लेकर, इसका डेटा नहीं है कि जब हम वायलेंस पे बात कर रहे हैं उसमें उलझ जाते हैं, जैसे श्रीनिधि कह रही है। उलझना मतलब क्या होता है कि वायलेंस में पहले जो एक ट्रेडिशनल तरीका रहा है, जो मैं जानती हूँ लोग वायलेंस में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम जो ऊपरी वायलेंस है उस पर इतना काम करते हैं, उसके रूट कॉज तक नहीं जाते। और रूट कॉज में अगर जाएं तो बहुत बड़ा संख्या वायलेंस का आपको निकलेगा, जो ये पूरा सेक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है या औरत का कोई स्थान नहीं है उसमें, उसकी अगर अपनी चाहत निकलती है तो भी वो मार खाती है, अगर वो बात करती है, अगर वो विरोध करती है, सही रिश्ता नहीं हो रहा है या वो रिश्ते से हाँ ना करती है तो भी उसके ऊपर वायलेंस है। तो हम वो वायलेंस को कम करें और उसके पुनर्वास करें, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसकी रूट कॉज तक नहीं गए हैं। तो ये वायलेंस के काम की एक लिमिटेशन रही है। और हमने खुद ने कई सालों पहले ये सोचा था, जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है लाइफ में, सब ठीक है, हम नहीं पूछते तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ कैसी चल रही। ये हमने भी अभी, ये हमारा लेटेस्ट ये ज्ञान मिला है हमें कि हमको ये पूछना बहुत जरूरी है। और हमको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे हमने जब एक वर्कशॉप किया तब हमें पता चला कि अपने पार्टनर से पूछ तो लें कि वो क्या सुरक्षित रिश्ता रखेगा हमारे साथ। वो अगर हमें इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि औरतों को रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और उसके इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे इसलिए क्योंकि सेफ रिलेशन नहीं है। तो क्या हम अपने पार्टनर से उसके बारे में बात करते हैं? क्या लड़का देखने जाते हैं या शादी बनाना है, तो क्या इस मुद्दे के बारे में बात हो सकती है कि वो लड़का क्या वो मतलब नहीं हो सकती। अभी मैं कह रही हूँ कि हमने अपने बीच में ये बात की कि हम ये देखें कि वो ये सब के बारे में नॉलेजेबल है कि नहीं, वो किस तरह से रिश्ता रखेगा कि हमें बीमारियां ना दे देगा। मतलब वायलेंस तो एक है, लेकिन बीमारियां भी हमारे को लग रहा है उससे।
तो ये जो हमारे बीमारियां लग रही है वो भी एक इशू एक बनता है। तो ये तो मैं ये कॉन्टेक्स्ट कह रही थी। पर मैं कह रही थी कि जो आप कह रहे थे कि बहुत कम साहित्य उपलब्ध है, पर श्रीनिधि मैं सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी और मैंने देखा हिंद पॉकेट बुक्स का एक पूरा लिटरेचर निकलता था, हिंद पॉकेट बुक्स में बढ़िया बढ़िया साहित्यकारों की किताबें, मतलब उसमें लाइब्रेरी होती थी और आप अगर मेंबर हो तो आपको हर महीने किताबें आती थी 10-12, उसमें छोटी छोटी किताबें में मेरे फादर मंगवाते थे, वो लिटरेचर के व्यक्ति हैं तो वो लिटरेचर भी आता था, उसमें एक दो किताबें आती थी। अच्छा, एक तो गुरुदत्त एक था, उसके गुरुदत्त के उपन्यास, मतलब शायद आप नहीं जानते हो उस समय का वो गुरुदत्त तो प्रेम प्यार के उपन्यासों में मतलब इतनी चीजें लिखता था। और एक पत्रिका और आती थी छोटी जिसमें 10-12 सिर्फ रिलेशनशिप की कहानियां थी, और वो और उसमें कई बार ऐसा था कि कई सारी चीजें हम उसके माध्यम से सीख लेते थे, जो आजकल जिसको अपन बोलते हैं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जो सेक्स रिलेटेड किताबें मिलती हैं, जो एक तरह से औरतों को और ज्यादा नीचा करती हैं और उसमें आदमियों की सेक्सुअलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं, वो अच्छी नहीं है। लेकिन उन पुरानी किताबों में कुछ हद तक मुझे लगता है कि वो एक लिटरेचर वो था जो अभी बिल्कुल खो गया, वो लिटरेचर बिल्कुल खो गया। और नया जो हम निकाल रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स के अंदर अंदर, ये प्रोजेक्ट्स की अपनी बड़ी लिमिटेशन है, प्रोजेक्ट को क्रिटिक करना चाहिए हमें। जो लाइफ स्किल के प्रोजेक्ट हैं, एक लड़की कोई हैदराबाद की थी जिन्होंने, मैंने देखा वो पीएचडी कर रही है लाइफ स्किल सारे मॉड्यूल्स को लेके, और उसने बहुत क्रिटिक किया है अपने उसमें कि वो लाइफ स्किल मॉड्यूल क्या दे रहे हैं हम। जो पूर्वी आप कह रही थी कि हम वो गुड टच बेड टच या 4-5 चीजों से आगे बढ़ते ही नहीं है, तो ये लिमिटेशन है कि हम उसके आगे बढ़ते ही नहीं है और उसको देखते नहीं है। जो हमने एक कैप स्टडी किया था राजस्थान में चाइल्ड मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमने उसमें 50-55 उम्र के आदमियों के साथ भी बात की थी और हमने ये पूछा था कि आप क्या आपकी शादी से खुश थे, क्योंकि अगर हम आज लड़कियों की शादी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हमें पहले उनको ले जाना पड़ेगा, उनकी शादियां, उनके रिश्तों में उनको क्या मिला और क्या आपको पसंद थी, या लड़की औरतों को भी पूछा आपको ये पति पसंद था जिससे आपकी शादी हो गई। एक्चुअली बड़ा डेटा इस बारे में आया कि उनको पसंद ही नहीं थे, कई साल बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर उन्होंने कहा हमने तो बस निभा लिया रिश्ता। सच में जब वो खुद भी बात कर रहे थे उनके भी आंखों में कई लोगों के आंसू थे। तो इसकी नीड कितनी है ये हमें देखना है कि जब हम आज उस पीढ़ी से भी बात करते हैं जो गुजर गई रिश्तों के अंदर और जिसने अपने बारे में नहीं सोचा अपनी, और आदमियों को तो फिर भी उन्होंने प्लेजर लिया, लेकिन औरतों ने जो, जब औरतें कहती है 55 साल की 60 साल की औरतें कि उनको जिंदगी में पता नहीं चल, बच्चे पैदा किए लेकिन उसको पति की आपूर्ति करनी है, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ, ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि पति की पूर्ति करनी है हमें। और औरतें भी कहती हैं कि शादी किस लिए कि बेचारे ने, तुम उसके तुम कर नहीं रही हो, तुम उससे लड़ाई झगड़े कर रही हो। अगर औरत थोड़ा भी अगर बात रखती है तो वो औरत जो 60 साल बाद या 55 साल बाद कहती है कि उसकी जिंदगी में, वो ये कहती है बहुत सारी मिठाई होती है दुकान में, कोई 2 मिठाई नहीं खाई तो बस ये समझ लो नहीं खाई। मतलब ये है कि अपने रिश्ते को कैसे जिया उन्होंने, कि सोचो जिंदगी में 2 मिठाई नहीं खाने को मिली, हम ऐसे समझ रहे हैं अपनी लाइफ। तो कभी कभी एक दुख होता है कि अपने लाइफ में जो इतनी नेसेसरी, मतलब हम सब जानते हैं कि बिल्कुल हमारी जो सेक्स की इच्छाएं हैं वो जुड़ी हुई है। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट में जो आपने क्वेश्चन उठाया है, वायलेंस पे तो बात होती है पर इस चीज पर बात नहीं होती, इसलिए हम फोकस इस बात पे कर रहे हैं कि औरतें आखिर खुशी प्लेजर कहाँ ढूंढेंगे, लड़कियां कहाँ ढूंढेंगी। क्या हम लड़कियों को वही जिंदगी देना चाहते हैं जो 55 साल की 60 साल की महिलाएं आज एग्जाम्पल देके कह रही हैं? हम वो जिंदगी में तो नहीं देखना चाहते, हम अपनी बेटियों को ही नहीं देखना चाहते तो हम बाकी लड़कियों को भी नहीं देखना चाहते। और यही हमारा मोटिवेशन है कि हम इस मुद्दे के ऊपर खुल के काम करें और जितनी स्पेस बना सकते हैं बनाएं और डेटा भी सामने लाएं। ये जो हमने कैप स्टडी किया, ये हमने किया है, वो छोटा डेटा है, मतलब वो लार्जर रिसर्च के फ्रेमवर्क में नहीं आता है क्योंकि हम ट्रेंड रिसर्चर नहीं है, लेकिन हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं हमारी लड़कियों को हम कुछ क्या काम करें वो समझने के लिए हम कर लेते हैं ये छोटे छोटे रिसर्च। हमारे संस्था में हम लोग छोटे छोटे रिसर्च करते रहते हैं इस तरह के। तो ये मेरा ये कहना है। थैंक यू. Thank you. We have only 10 minutes left.
of this panel. So many loose ends to tie up. I don't know if somebody wants to very briefly address the question of age appropriateness. Yeah. Purvi? So the two questions, like the 6-year-old male child, or I think while talking about SRHR, and I think there is a wonderful question which is related to this only. Aarti Shukla said कि जो क्या consequences हुए sex ed education के नहीं. तो I think इंदिरा जी ने वो चीज बताई है कि हमारे पास sex ed education नहीं थी, तभी 55 साल तक महिलाएं आज तक ये बोल रही हैं. मैं मेरी उम्र की और यंग लड़कियां भी नहीं है. और जहां तक कि डेटा की बात है तो हम we have done a research and we have a research paper that is published on how giving sex ed education has improved the way they see life, and how they have this I think choice is a big word, agency is a big word, but they understand things in a better way. So मुझे ऐसा लगता है कि जब हम SRHR की बात करते हैं, this question always pops up that how much information is too much information, and it is just a general anxiety that, oh my god, why are you talking about sex ed to 12-13-year-old? It's बड़े होंगे अपने आप सीख जाएंगे, या फिर it's so like they will start having sex. This idea that I've been questioned a lot of times, and not just with the people who are not in the proximity of social work or NGOs, but in general also. And so why do you want to talk about sex ed? You can give information about good touch, bad touch, you can talk about violence, but why are you giving sex education? Why a 12-year-old needs to know why sex education is important. So my thing, what I understand from the curriculum that we have talked about, and from the various people that work on sex education, is that this assumption that when you know what sex is, you start humping around, that's not there. They just understand their body in a better way. They understand the knowledge and they can make choices. In our country, no, when we talk about agency, we don't have agency for women. Adolescents don't have agencies. Children are not supposed to have agency. Nobody is supposed to have agencies except for men in patriarchal society. So it roots from very deep-seated mindset, and I feel that if we are giving them sex education in a way that they understand, can make choices and have agencies to have decisions that, okay, this thing is right for me, or maybe just they want to explore. What is the harm in exploring? Why do we have to be so instilled in the lives that we are not even allowing our adolescents to at least fall, do something? That meaning, I'm not saying that, not talk about violence, do talk about it, but also this information is very important, and we do have age appropriate content. And I think even in the chat messages YP has written, they have also created comprehensive sexuality. We have age appropriate content, and it's from 10 to 12 and 12 to 15 and so on. But it is very important that they understand. I think first thing is talking about sexual parts. We still talk about eyes, nose, ears. Nobody will even utter the word penis or vagina, or clitoris is something that is just out of context. So I think it is very important to start with body parts and then go ahead and talk about it and give the information to children before they hit puberty, because out of the blue, everything is happening and there's so much confusion. And obviously and we have internet. So there's so much information. So why not give information in a way that is unbiased, not marred by our own judgments, so that they can navigate in a better way? Or I think consequences of not having structured sex ed is, this is reflected in our relationship. We're being a young woman, I feel it was, and I have always heard that our parents are giving us education on everything. There's this young girl who told me that she works in a corporate job, and she said that, our parents have given every part of the information and they just want us to get married to some stranger. I don't even know whether I'll be comfortable having sex with the person. So talking about relationship, having boyfriend, girlfriends, or just being in love to experience what your body would love or like, or may not like it. So these conversations do not exist. And I think if you start with the sexuality education,
very beginning, I think it is going to be great. At least they'll know what is happening around them, understand their body. And for 6-year-old male, I don't know. I mean, maybe you should talk to him more or observe him around, or maybe just talk about it. Just tell them the name of the organs. It is okay to have curiosity. Young kids don't just, I mean, it is okay for them to ask question and for us to not freak out, because when a kid asks you a question, they also see your expression. And if you have horrified expression on your face, or if you're just puzzled, try to navigate that, because that is the impression that your child will carry throughout the life. I still remember what things used to happen around me. So it is very important to see, observe your kids, and to give them information in the best possible way. And there are lot of things that are available on internet also. There are information. You can reach out and talk to them. The only way to have anything is to have conversation. And in Indian society, our parents need to really just a little step up and come out of their zone and give that space to child to ask question and to really listen them, not throw here and there your judgments. So I think, and I think we don't have a sex ed in mainstream. If I'm not wrong, school does not have sex ed education. They have life skill program. They just touch upon it and maybe not. So and talking about trans identity, it is very important to have this comprehensive sexuality education. Sorry. Thanks so much. I'm so sorry to interrupt, but we have 3 minutes left, and I know that we also have to let the organizers do a little closing. So I want to just leave everybody with the question that Vinita brought up, which I really wish we had more time to talk about, and maybe we can get one really quick insight, Srinidhi, I'm hoping from you. Vinita says, Purvi and Indira both mentioned instances of how women could relate to other women's bodies and having similar anatomy help them understand themselves. But how can we help create similar spaces or experiences for people who may not feel that way? For example, trans and queer people who do not relate to their bodies the same way and may find same-sex spaces unrelatable or alienating. Does anyone want to add a few thoughts to that? I just think it's so important that we do think about these things and sort of do continue to question the rigid gender binary, the heteronormativity that we all inherit from birth. I mean, I really think even people who think they're heterosexual and people who think they're, very cisgendered benefit actually from examining these structures. It isn't an afterthought that's just like the add-on to the main curriculum. It's as if, okay, now we have to be queer inclusive, so now we'll have one chapter on LGBT, as if it's this fringe thing. I really think it needs to be part of the whole. I mean, I think we all should be interrogating so many of the sort of default settings that we inherit in terms of how we think about gender and sexuality. And I think everybody, regardless of how they might identify at a given point, benefits from interrogating certain things that they've just, not had the opportunity to question before. For so much of us, I think heterosexuality is sort of compulsory, and a rigid gender binary is also just, when do you get to question it? So I personally think instead of it being a separate space or an add-on or like a, just because we need to be politically correct, I think it's so fundamental and so enriching actually for everybody, including the people who are cis-het or whatever, to pay attention to this. This is our issue. This is not other people's issue. This is not some fringe issue for later or for the footnotes. I know we're like at 1:59 now, but I'm sorry I answered that question myself, but I did think we should touch upon that. All right, I think I have to hand over to Devasmita, but thank you to Indira ji, Purvi and Srinidhi. This was so wonderful. I wish we had one more hour to talk, and I wish my internet hadn't let me down. But I hope that you found this to be a valuable discussion. Thank you so much for being here with us. And thank you to everyone who tuned in. I hope that we can continue having such conversations. I'm so grateful to Agents of Ishq and the YP Foundation for giving us this opportunity and for placing so much needed a spotlight on pleasure and sex education, love, sex, and data, all of that. Thank you.
थैंक यू लीजा, पूर्वी, श्रीनिधि। मुझे एक मैसेज आ गया मेरी डॉटर से, उसकी फ्रेंड्स और वो मिलके सब सुन रहे हैं और उनको हमारी टॉक बहुत अच्छी लग रही है, सबकी बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी लगी है। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट वो भी मिल गया। हम बहुत लड़ते हैं मेरी डॉटर और वो सोचती है मैं पुराने विचारों की हूँ, पर उसको हमारी ओवरऑल टॉक बहुत अच्छी लगी। थैंक यू लीजा और पूर्वी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनकर। बहुत मजा। Thank you so much. Thank you to all our panelists. This has been an absolutely amazing session, and what everyone has said, Indira ji, Purvi ji, Leeza, and Srinidhi, I think we do need a lot more than just a one-size-fit-all sex ed. And I think the fact that we have had so many, that in this panel itself, we have had people from different generations and who have been working in such different spaces and have been talking about sex in these different spaces. I think it's really important, and for us to be able to have these conversations with each other, as well as recognize that sex education isn't happening only in that one class in school where you download all of your information. Like, I really wish that the lady did not have to say ki hamari to life ho chuki hai, and that there is sex education for us at every age and in different kinds of spaces. Like, even like if we are just going to the toilet with our friends, wahan pe bhi sex education ho, school mein bhi sex education ho, wo sabse acha rahega. We also apologize to everyone for the panel starting late, but we really hope you enjoyed the conversation. We are going to take a short break for lunch, and at 2:30 we have our next panel, which is Let's Play Doctor, Medicalization Bodies with Dr. Sanjida from Sehat, Dr. Aksa Sheikh, Dr. Payoshi Mitra, for those people who are interested in understanding this idea of bodies, the body, and the medical field, how it talks about bodies and how it affects different people. This would be a very interesting panel. You can head to our website, www.lsdindia.com, and log in from the dashboard for that session. Also, we have a very special session in the evening, which an after-hours performance with Aditi Mittal, aka Dr. and Mrs. Savitri Luchake. So do not miss that session. It is not going to be live streamed. So you should definitely catch it. And of course, with everything that is pleasurable, be sure to come back for more to LSD.